अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम लोग बनाएंगे सैफ्रॉन मिल्क केक। उसके लिए हम लोगों को चाहिए कोई भी रेगुलर वाइट केक मिक्स और उसको उसी तरह से प्रिपेयर करेंगे और उन्हीं इंग्रेडिएंट्स को डाल के जो उसके बैक साइड पे लिखे हैं, विच इंक्लूड्स कप ऑफ ऑयल, 1 कप ऑफ वाटर, 3 एग्स विद योक। और अगर आप लोगों ने एग वाइट इंक्लूड करनी है तो 4 एग्स विल बी इनफ विद वाइट। इस केक को हम उसी तरह से बेक करेंगे जिस तरह से हम लोग नॉर्मल केक्स बेक करते हैं। डायरेक्शंस बॉक्स के पीछे लिखी हुई होती हैं और अगर आप लोगों ने मिक्स नहीं इस्तेमाल करना चाहते तो उसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी सब मेजरमेंट्स, सब चीज़ों की आप वहाँ से देख के बेक कर लीजिएगा। और कुकिंग लिक्विड प्रिपेयर करने के लिए हम लोग लेंगे 1.5 कप ऑफ कंडेंस्ड मिल्क और स्वीटन कंडेंस्ड मिल्क ले लें ताकि आपको शुगर एक्स्ट्रा ना डालनी पड़े। 1 टीस्पून ऑफ सैफरॉन। उसके बाद हम लोगों को चाहिए होगा 1.5 कप ऑफ मिल्क एंड 1/4 कप ऑफ क्रीम। इन सबको हम एक साथ मिक्स करेंगे और उसमें मिक्स कर देंगे और मिक्स करने के बाद हम लोग केक को इस लिक्विड में सोक। वी विल स्टार्ट बाय प्रिपेयरिंग द केक अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शंस मेंशन्ड ऑन द केक बॉक्स। We will grease our pan with a piece of butter or oil. 30 seconds in the microwave. The butter has melted well. इसके बाद हम लोग ब्रश से अपनी साइड्स को कोट करेंगे बिकॉज ट्यूब से इसकी साइड को कोट करना बड़ा मुश्किल था। Put the batter inside our अपना बैटर डाल लेंगे। इसमें I have mentioned कि इसको कितनी देर तक ओवन में पकाना है। You can see it from the description box. इसको अच्छी तरह से इवनली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और बाद में इसको फ्लैट कर लेंगे। इसको ऊपर से अच्छी तरह से फ्लैट करने के बाद इसको हम लोग ओवन में रख देंगे। Cream, डालेंगे 1/2 कप ऑफ कंडेंस्ड मिल्क, इसको लो फ्लेम पे आहिस्ता आहिस्ता पकाएंगे। इसको इवन आउट करेंगे। ब्लेंड करने के लिए इसमें कोई भी लम्स ना रहे, इसमें हम लोग इसको 2 to 3 मिनट्स तक कुक कर लेंगे और इसमें अपना सैफरॉन 4 टीस्पून हम लोग थोड़ा सा सैफरॉन मिक्स करके अपने पैन में इंक्लूड करेंगे। तो 4 टीस्पून ऑफ मिल्क, उसमें हम लोगों ने थोड़ा सा सैफरॉन डाला है और इसको हम लोग अपने पैन में इंक्लूड कर देंगे ताकि उसको अच्छा सा फ्लेवर मिल जाए। इसमें हम लोग डालेंगे 1/2 या 1/4 टीस्पून ऑफ येलो color and we'll mix it just to give it a nice yellow saffron color. जो मिल्क हमने तैयार किया था वो आहिस्ता आहिस्ता से इस बोल में हाफ ट्रांसफ़र करेंगे ताकि हमारा केक जूसी हो जाए। और इसको रेफ्रिजरेटर में रख देंगे तकरीबन 2 आवर्स तक चिल होने के लिए।
you can just grab some petals of flowers which are colorless actually, and you can use them as well if you want too much sprinkles over it. And then we'll add some toppings. Should make it more delicious. And our cake is ready to taste.